Hi guys, what's up? Welcome or welcome back to my YouTube channel. And I want to say something before starting this video. This top, I just think it's so adorable. Like this, so cute. I like it. I like it, and it has that color. I don't know. What is the new term? Color boxing, reading, whatever. I don't know. But it's like a mixture of that lilac and pastel, like pastel purple and blue, which is so cute. So cute. This is so cute. Okay, so start करते हैं आज का video, you guys. So I have like I was thinking about making this video like for so long. Finally, I got this time. आज finally मुझे time मिला ये video बनाने का. So I'm going to talk about my recent current favorite skincare products. Yes, you guys, like my skin is like doing so good these days. Like it's kind of unbelievable. Like to be honest, and with or without makeup, it is looking amazing. Like so, I'm so proud of myself. एंड ऐसी स्किन अचीव करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं. यू नीड टू लर्न सो मच अबाउट स्किन केयर, देन यू नीड टू ट्राई सो मेनी थिंग्स. सो या मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ तो एम्प्टी हो गए, मैंने अभी एम्प्टी शूट किया, उसके बाद आई थॉट कि बिफोर थ्रोइंग दिस आउट एक बार बात कर लेती हूँ, फिर आई विल थ्रो देम आउट. But yeah, I wanted to discuss like some of this amazing makeup products, oh amazing skincare products. So yeah, without further ado, let's get started. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो वीक में आजकल मैं एक बार कर रही हूँ, is this is the Ika. So this is a very giant component. First of all, this is Ika C the Glow Face Souffle. So ये मैं आजकल यूज कर रही हूँ. It is really effective, you guys. मैं clip insert कर दूंगी. You will see a visible difference in फर्स्ट यूज ओनली. एंड वाकई में स्किन इससे ना काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगती है. एंड इफ़ यू आर आउट एंड अबाउट, कहीं बाहर जाना हो तो भी ये यूज़ कर सकते हो. वीक में एक बार करो, यू आर गुड टू गो. स्किन में ना काफ़ी डिफरेंस समझ में आता है इसको यूज़ करने के बाद ही. तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस आउट. सो ये वीक में मैं एक बार करती हूँ. एंड दैट्स द मास्क आई एम यूजिंग. पहले मैं बहुत ज़्यादा ना acne related mask use करती थी. I still use them. I will show you. Okay, so this is also my current obsession. You can see कितना ज़्यादा empty out हो गया है. And जब मुझे ज़्यादा acne issues होने लगते हैं, I switch to this. This is skin purifying face mask. एंड मैं तो क्या करती हूँ, जब मेरा बहुत ब्रेकआउट स्टेट में होता है फेस, तो मैं कंटिन्यूसली यूज कर लेती हूँ. वैसे इतना मास्क नहीं यूज करना चाहिए, बट इट्स ओके इफ यू आर ब्रेकिंग आउट अ लॉट. बट दिस इज वेरी इफेक्टिव टू टेम डाउन एक्ने. एंड दिस इज सो हाइड्रेटिंग. इसको लगाने के बाद ना हाइड्रेटिंग फील होता है, एकदम स्किन ड्राइनेस नहीं लगती. तो दैट इज ऑल्सो गुड एंड इट इज वेरी इफेक्टिव ऑन एक्ने. So I really like this one also. और ये तो काफी मतलब यूज अप कर लिया मैंने. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. मैं स्क्रब नहीं करती हूँ, तो मैं सिर्फ मास्क करती हूँ वीक में एक बार, या अगर बहुत एक्ने है तो इसे यूज कर लेती हूँ. ओके, सो द नेक्स्ट इज ओके. सो क्लेंजिंग के लिए आई यूज ये दोनों एंटी हैं, तो इससे पहले कि मैं फेंक दूँ, डिस्कस दीज. तो दिस इज द पॉन्ड्स वन. दिस इज वेरी गुड, बट इट स्ट्रिप्स डाउन मॉइस्चर फ्रॉम योर फेस. तो अगर मेरे जैसे हो, बहुत ही ज़्यादा साफ फीलिंग वाला फेस वॉश चाहिए, यू कैन ट्राई दिस. बट इफ यू हैव वेरी ड्राई स्किन, मेरी तो अब नॉर्मल टू ड्राई है, so कल आज तो कॉम्बिनेशन लग रही है. ओके, सो मुझे वो बहुत पसंद है पॉन्ड्स का फेस वॉश. बस आई डोंट वांट टू टॉक पॉन्ड्स दैट मच ऑन माय चैनल फॉर सम रीजन. ऐसा कुछ एलर्जी नहीं है मुझे, बट skincare, there are better brands. Okay, so Mamaearth, you know my love for Mamaearth. I love Mamaearth so much. So this is the empty. मैं फेंकने वाली थी, सोचा इस पहले ये वीडियो बना लेती हूँ. So this is so good, you guys. This is a vitamin C face wash for illumination, and this is amazing. आजकल मैं vitamin C बहुत incorporate कर रही हूँ for that, you know, glowy skin, and I do see a visible difference with this one. I love this. This is so hydrating also. इसको लगाने के बाद ना फेस ऐसा खिंचा खिंचा फील नहीं होता, हाइड्रेटिंग ही फील होता है. तो आई लव दैट एस्पेक्ट ऑल्सो अबाउट दिस. बट दिस इज सो गुड, एंड मामाअर्थ इज माई फेवरेट ब्रांड. तो वैसे भी थोड़े बाइस ओपिनियन रहते हैं, मुझे हर चीज पसंद आती है मोस्टली मामाअर्थ की. सो आई रियली लाइक दिस वन. हाईली रिकमेंड यू दिस वन, मोर सो देन द पॉन्ड्स वन. दिस वन. My recent purchase, this is the Lux Go Organic Lux, and this is ultra hydrating face mist. नाम से ही समझ में आ गया. This is very effective, you guys. This is very effective. This has vitamin C and niacinamide.
I just love this one. This is so hydrating and refreshing. This is so good. You know, जब मैं एक hectic day के बाद इसे स्प्रिट्स करती हूँ अपने face पे मुझे बड़ा अच्छा feel होता है and I'm thoroughly enjoying this face mist. और it hydrates and illuminates. We all know vitamin C is good for that effect. So it is amazing. और नया नया है फिर भी काफ़ी you can see मैंने यूज़ अप कर लिया है इसे. बहुत नया परचेज है ये. And एक चीज जो मेरे पर्स में आजकल हमेशा होती है इसलिए वो मेरी डेस्क पे मुझे दिख नहीं रहा है. I'll pick it up. Okay, so the one toner I'm totally obsessed with is this one. This is by Pilgrims and this is so good, yeah, you guys. This is TT Purifying Toner. और ये तब मिनी है. This retails for I think 200 rupees for this mini, which is a lot. because ये tiny सा है. मैं इसे कहीं भी जाती हूँ मैं लेके जाती हूँ. दिस सो गुड यू गाइज. आई लव इट सो मच. एंड एज अ ट्रैवल कंपोनेंट ना मैं इसको फेंकने नहीं वाली. आई विल रीफिल माई अदर टोनर्स इसमें ताकि मैं टोनर्स यूज करूँ. आई हैव अनदर वन जो मैं इसी वजह से यूज नहीं करूँ क्योंकि स्प्रिज वाटर नहीं है. तो आई थिंक टोनर में तो स्प्रिज वाटर होनी चाहिए. तो आई रियली लव दिस. एंड वाकई में इट्स क्लैरिफाइंग. अभी तो मेरी स्किन इतनी क्लियर है इतना बोल नहीं सकती मैं बट आई फील दैट कि इससे अफेक्ट हो रहा है. सो दैट्स दैट. So the next is another that you know I want to discuss some body products also. So this is I have two of these empty right now. So I love this. Like this is so good if you want hydration but lightweight चाहिए ऐसा heavy feeling वाला you know lotion नहीं चाहिए. This is very good. I really like this one. So it's amazing if you have dry skin like me but you know गर्मी है तो heaviness नहीं चाहिए. तो ये एलोवेरा वाला वर्जन वैसलीन का is amazing. So I wanted to recommend this also. हमने क्लेंजिंग कर ली, टोनिंग कर ली, फिर उसके बाद आता है सीरम. एंड सीरम में आई हैव दिस वन. दिस इज प्लम का नया यू नो मैंने ओपन किया है. यू कैन सी यहाँ तक 20% इज डन. First of all, the component is so pretty. This blue component is so pretty. You guys know how much I love blue and purple, so this is so good. I want to discuss both of these. This is by Derm Doc और ये भी 2% है, ये भी 2% salicylic acid. These salicylic acid are so good if you have dry skin, dry acne prone skin like me, you guys. You will love them. क्योंकि कई बार salicylic acid लगा लो ना फिर ऐसी dry skin होती है. But these two products are so good and it will clear out your skin. कई बार तो होता था जैसे मुझे हैवी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो उस रीजन में ज़्यादा सीरम लगा के I will just slap a lot of salicylic acid wala gel and sleep, and this helps so much in taming down my acne and I love this. This is an empty and this is 20% gone. I highly recommend both of them and they are affordable, good quality products. And Plum के लिए मैं कहूँगी Plum की वेबसाइट से लो. It is so cost effective you guys. And अभी ना मेरा स्किन केयर डॉट पूरा भर गया है नहीं तो अभी बहुत अच्छा बाय टू गेट टू ऑफर हमेशा Plum पे आ रहा है, Plum की साइट पे. तो go check out their website and shop. अमेजिंग डील्स हैं वहाँ पे. आई वॉज लाइक सुपर इम्प्रेस्ड कि इतना अमेजिंग ऑफर्स आते हैं. प्लम वैसे अफोर्डेबल नहीं है बट उनकी साइट से ले लो ना तो सो मैनी गिफ्ट्स दे गिव, सो मैनी ऑफर्स. दिस इज अमेजिंग. लाइक आई लव बाइंग प्लम फ्रॉम देयर वेबसाइट नाउ. मैं वहीं से लेती हूँ. Next is another serum. This is Good Vibes का tea tree papaya serum. This is so good you guys. And हम हर दिन तो you know salicylic acid slap कर नहीं सकते हैं. हालांकि मैं करती हूँ जब मुझे acne बहुत breakouts होता है तब. Otherwise, I stick to this. This is so good, you guys. Tea tree is really good for your skin, for clarifying your skin. And ये भी खत्म होने वाला है. We can see 10% इसमें है अगर कैमरा I don't think so can capture this. बहुत थोड़ा सा बचा है. तो next month मेरे आंटी में रहेगा. And I switch between this and salicylic acid. Depend upon my acne situation. Amazing. Like love this and definitely going to purchase this again. Okay, so serum के बाद we will apply obviously a moisturizer. Now I have emptied out so many moisturizers. So many moisturizer I have emptied out recently. So these two are my favorite. So this is also an empty. This is also an empty. So yeah, this one is Sika Niacinamide Spot Reduction Oil Free Moisturizer. Love this stuff so much. It is amazing. इससे वाकई में स्किन बहुत साफ होती है. और ये मेरी वैनिटी पे ऐसे पड़ा हुआ था. आई वाज लाइक कि खत्म कर लेते हैं, खत्म होने ही वाला था. And finally I have emptied this out and this is so amazing. This is fragrance free also. And if you have acne prone skin, check your ingredient list. उसमें fragrance तो नहीं है. कोई भी ऐसा क्रीम नहीं लगाना, कोई भी ऐसा स्किन केयर नहीं लगाना जिसमें fragrance हो. So this is amazing if you have acne prone skin.
या एक्ने स्कार्स हैं, मेरी स्किन इससे बहुत क्लियर हुई है इन द कॉन्कॉक्शन ऑफ इसका ही नाइट जेल मैं रात में लगाती हूँ. दिस इज ऑल्सो एन एम्टी. तो दिस इज डॉट एंड की का सीका कामिंग स्किन रिजिनवेटिंग नाइट जेल. सीका इज रियली कामिंग. इफ यू हैव इन्फ्लेमेशन ऑल्सो ना ट्राई करना, बहुत अच्छा है. दिस फॉर 500 रुपीज एंड बेस्ट 500 रुपीज दैट यू कैन इन्वेस्ट ऑन योर स्किन. दिस इज वेरी गुड. राइट में तो हमारी स्किन रिपेयर होती है, उसी टाइम हमको ना अफेक्टिव स्किन केयर की जरूरत होती है. तो दिस इज वेरी इफेक्टिव. गो ग्रैब दिस इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी. बहुत ही ज्यादा अच्छा है. ओके, अनदर मॉइस्चराइजर आई वांट टू सजेस्ट इज दिस वन. दिस इज सो गुड यू गाइस. अमेजिंग. तो दिस इज माई वाव. और वाव के प्रोडक्ट्स मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैं कभी ट्राई नहीं किया. दिस इज माई फर्स्ट वाव प्रोडक्ट परचेज एंड आई थॉरली एंजॉय दिस. इज विटामिन सी विद हाइलोरॉनिक एसिड. दिस इज सो गुड. यार गजब का मॉइस्चराइजर है. आई वॉज मिसिंग दिस सो मच. ये मैंने खत्म कर लिया है. नाउ आई एम यूजिंग दिस वन ऑल्सो. दिस इज एक्वालॉजिका का नया वन, न्यू वन. एवरीबडी इज रेविंग दिस. दिस इज सो गुड. तो अब मैं ये यूज कर रही हूँ बट आई स्टिल मिस दिस. दिस इज सो गुड यू गाइस. इट हैज विटामिन सी एंड hyaluronic acid. बेस्ट इफ यू हैव ड्राई एक्ने प्रोन स्किन लाइक मी ना, और ड्राई स्किन है बट वी वांट दैट ग्लो. तो वो ग्लो इसी से आता है. सो वो ग्लो इसी से आता है. आई थॉरली इंजॉय दिस एंड डेफिनेटली मैं इसका बड़ा पैक परचेज करूंगी. आई थॉरली इंजॉय दिस. बस स्किन केयर होना तो उसका सैंपल परचेज कर लो, यूज करके देख लो. एक महीने यूज करोगे पता पड़ जाएगा. आई थॉरली इंजॉय दिस और मैं इसको जरूर रीपरचेज करूंगी. नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ करो ना करो लेकिन क्या करना है कमेंट करके बताओ. ऑफ कोर्स सनस्क्रीन. सो आजकल ना आई एम लाइक रियली रियली एंजॉइंग दिस वन. सो ये मेरा रिसेंट परचेज है. आई रियली एंजॉय दिस वन. सो दिस इज, पहले तो थोड़ा सा लगता है ये बट जब स्किन में घुल जाता है, इट हैज द ग्लॉसीनेस, द जूसीनेस एज अ स्किन केयर, एज अ प्राइमर, एवरीथिंग. कैसे भी इसको यूज कर सकते हो. दिस इज सो गुड यू गाइस. आई वॉज शुक बाय द क्वालिटी. इतना ज्यादा डूई बना देता है स्किन, इतना जूसी प्लम्पी हाइड्रेटिंग बना देता है. I was like क्या हो तुम, लाइक अमेजिंग. लाइक you know this is amazing. This sunscreen, as a makeup primer also you can buy this. I am telling you it is amazing. लव इट सो मच. आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस वन. इतना ज्यादा ग्लॉसी और हाइड्रेटिंग जो फील होता है ना इसको लगाने के बाद, मजा ही आ जाता है. थोड़ा सा स्टार्टिंग में वाइट वाइट दिखता है बट ब्लेंड होके सही जाता है ना. ओके, सो द नेक्स्ट एंड माई करेंट ऑब्सेशन एंड दिस वन इज ऑलवेज ऑलवेज इन माई वैनिटी. एकदम टॉप पे रहता है ये बिकॉज आई लव दिस. एंड ये फ्री में मुझे प्लम से मिला था क्योंकि मैं प्लम से बहुत शॉपिंग करती हूँ. एंड आई एम लाइक ऑलमोस्ट हाफ वे डन यू गाइज. दिस इज अमेजिंग एज अ मेकअप प्राइमर ऑल्सो. आजकल क्या सनस्क्रीन आ रहे हैं, बिल्कुल मेकअप प्राइमर का भी काम कर रहे हैं. मतलब अमेजिंग. सो दिस इज राइस वाटर एंड नियासिनामाइड हाइब्रिड सनस्क्रीन. लव दिस सो मच. इट इज अमेजिंग गाइस. बहुत ही कमाल की सनस्क्रीन है. राइस वाटर है इसमें एंड द कंसिस्टेंसी इज सो लाइट वेट. बिल्कुल डूई बना देता है, ग्लॉसी बना देता है स्किन को. एज अ प्राइमर भी इफ यू हैव ड्राई स्किन यू विल रियली लाइक इट. ऐसा जूसी ग्लॉसी स्किन को बना देता है ना, स्किन को देखकर मजा आ जाता है. तो यार ये तो लेना बनता है. सो दिस यू शुड बाय. दिस इज सो गुड यू गाइस. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन. बहुत सारे मैं सनस्क्रीन ट्राई करती रहती हूँ बट सबसे अच्छा मुझे शायद ये लगा होगा. मामा अर्थ वन इज ऑल्सो इक्वली गुड बट ये थोड़ा और लाइट वेट है. दिस इज समथिंग एल्स. दिस हिट्स डिफरेंट इफ यू नो व्हाट आई मीन. ओके, सो एक चीज के बारे में बात करना भूल गई मैं, जो मैं रोज स्किन के मैं यूज नहीं करती बट अगर मैं मेकअप कर रही हूँ तो ये तो मेरी स्किन में जरूर जाता है. दिस इज पर्पल ककाड़ू प्लम स्किन illuminating serum. This serum is so good if you have dry skin like me. You should incorporate it, especially as your makeup base. Like amazing product. This is so good in terms of quality and इतना लाइट वेट है ना ये सीरम. आई विल शो यू. बट जो ये ब्लेंड होता है ऐसा ग्लॉसी स्किन दिखती है, ग्लास लाइक स्किन लगती है. मेकअप स्लिट्स सो वेल ऑन दिस. बहुत ही अच्छा, मतलब अमेजिंग अमेजिंग इल्यूमिनेटिंग सीरम है. एकदम ग्लास लाइक स्किन कर देता है एंड मेकअप सिट सो वेल विद दिस. तो मैं यूज डेली में नहीं करती हूँ उसको. डेली में मुझे ऐसे सीरम की जरूरत नहीं है. ओनली फॉर मेकअप बेस आई यूज दिस.
I thoroughly enjoy this one so much. Like मजा ही आ जाता है इसको यूज करके. Okay, so now the last and very important thing is a micellar water. भाई मेकअप कर रहे हो तो मेकअप रिमूव भी करने के लिए कुछ होना चाहिए. This one is almost halfway gone. You can see, and this is by Himalaya, and this retails for 60. No, it doesn't retails for. It is for 125 rupees. I got it for 60 rupees. I was like, अमेजिंग. लाइक आई मैंने जब लिया था मैं सोचा था हाँ डेली वेयर वाला मेकअप निकल जाएगा, इससे सारा मेकअप निकल जाता है. इट इज सो गुड यू गाइस. आई हाईली रिकमेंड दिस वन. दिस सो गुड. बहुत ही अच्छा है ये. दिस इज अ मस्ट बाय माइसेलर वाटर. 60 रुपीज. यू कांट बीट दिस प्राइस. लाइक बहुत अच्छा है. एंड स्वॉचेस रिमूव करने के लिए मुझे चाहिए रहता है, तो ये हमेशा मेरी वैनिटी में ना ऐसे बहुत ही क्लोजली जहाँ प्रोजेक्ट ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं वहाँ रहता है. Another one is the last product. This. अब hear me out, hear me out. You know moral science lecture मुझे कोई देने लगे उससे पहले मैं बता दूं मैं इसे रोज यूज नहीं करती हूँ भाई. एंड ये मेरा कब से चल रहा है. दिस इज डेली एसेंशियल क्लेंजिंग वाइप्स. एंड इसमें ना क्लेंजिंग है, टोनिंग है, क्रीम है. 3 in 1 ये प्रोडक्ट है. एंड इसे मैं तब यूज करती हूँ जब मेरा हेक्टिक शूट डे होता है. बहुत मंथ में 4 बार होता है. तो 4 times यू कैन से इन अ मंथ आई यूज दिस. ज्यादा नहीं. या ट्रैवल कर रहे हो जो भी रेयर चीज है. मैं मुझे ट्रैवलिंग आई हेट ट्रैवलिंग यू कैन से. मुझे नहीं पसंद. ओके सो तब बहुत थक जाते हैं, बहुत फटीग आ जाता है ना, इतना टाइम एनर्जी नहीं बचती कि स्किन केयर करते बैठो. जस्ट लेदर दिस ऑन लाइक घिस लो अपने फेस को इससे. क्या बोलना चाहिए. जस्ट रब योर फेस विद दिस. वाकई में लगता है कि हाँ क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग सब हो गया है, क्योंकि यू नो द इफेक्ट ऑफ स्किन केयर इफ यू डू इट रेगुलरली. वैसा ही इफेक्ट इससे मिलता है. एंड दिस वाज 60 रुपीज. अगेन यू कांट बीट दिस प्राइस. ओरिजिनली 89 रुपीज. आई गॉट इट फॉर 63 रुपीज. मेकअप रिमूव कर देता है, इंट्रिकेट आई लुक हो, वाटर प्रूफ, एवरीथिंग. दिस स्टफ इज गुड लाइक अमेजिंग. लाइक बहुत वाटर प्रूफ मैं यूज नहीं करती बट फिर भी पूरा मेकअप अच्छे से निकल जाता है. फेस बहुत ही क्लेंस, हाइड्रेट, सब हो जाता है इससे. तो 3 in 1 स्टेप है. कभी अगर जल्दी में हो या नहीं है टाइम, नहीं है एनर्जी, यू आर सिक और समथिंग, so you can use this. Okay, so yeah, that's pretty much it for this video, you guys. These are my current favorite skincare products. I am enjoying them so much. तो share करना तो बढ़ता था. So I did that, and I hope you like this video. This was like really helpful to you guys. So I hope you like this video. I hope you find this helpful. मुझे तो लगता है बहुत helpful video रहा. ये मुझे comment करके जरूर बताना कैसा लगा. And ऐसे ही informative videos के लिए do consider subscribing my channel. If you like the vibe, if you like the content, if you found this video helpful, तो एक सब्सक्राइब कर दो. एक सब्सक्राइबर से बहुत मोटिवेशन मिलता है. तो प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन. And yeah, that's pretty much it this for this video, you guys. I hope you like it. I hope you enjoy this, and I shall see you in the next one. Bye.